right, so the function is given and the B part says find the value of t for which p is instantaneously at rest. Now we have velocity. Velocity function is given and we want to figure out find the value of t for which p is instantaneously at rest. Instantaneously at rest means that the value of velocity is 0. So we just put v is equal to 0. Now how is v is equal to 0? You put the whole function t square over e power 8 minus 4 whole cube equal to 0. Now to get rid of the cube, I just have to take cube root on both sides. If I do that, I'll end up with t square over e power 8 minus 4 is equal to 0. Now again, it's simple algebra. I'll do t square over e power 8 equals to 4 because this 4 goes here. And then I multiply this thing here. I get t square is equal to 4 e power 8. No need to put this in a calculator and get a different value. Then you do square root of this. Now plus and minus both, because this is velocity. Velocity always has a direction. So it can be plus and minus both. That means plus and minus. 4 square root is 2 and e power 8 square root is power half. So that is e power 4. And there you go. That is your answer. You don't have to put it in a calculator and get a value क्योंकि हमारे पास ये एक exact answer है. Exact answer का मतलब है कोई decimals नहीं है. It is not an approximation. And that is exactly what we're looking for. Okay, we don't need to do anything else to it. Now the next part basically says, and that's the part that's relevant to our topic today. It says that find the acceleration when t is equal to p. T is equal to 1. Okay, so we know time is 1, but we want to figure out the acceleration. We don't have an equation for acceleration. For that, we have to remember the relation. The relation is dva. In this direction, they are derivatives, and in that direction, they are integrations. Distance का derivative velocity होता है, velocity का derivative acceleration होता है. In the opposite direction, acceleration का integration velocity होती है और velocity की integration distance होता है. ठीक है, तो यहाँ पर we have velocity is equal to t square over e power 8 minus 4 whole cube. So when you take derivative of this, you will get acceleration. So I can say a is equal to dv over dt. अब इसका मतलब क्या है? मुझे इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये जो फंक्शन नीचे लिखा होता है ना, जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज द वन विच इज गोइंग टू बी माय मेन फोकस. Alright, so I cannot get to this t without having to first go through this 3. So I'll take the derivative of this 3. So 3 comes here. Everything else remains as it is. You cannot touch them until you get rid of this. This power 2, because 3 minus 1 is 2. Now this is open to you, the inside thing, and now you will take a derivative. Remember that e is a number, just like 4 is a number. तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे. It will just remain as it is. वो e power 8 वैसे का वैसे रहेगा. आपने t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, वो जो कि बन जाएगा 2 times t power 1. Why 2? Because this 2 multiplies and t power 1 क्यों? क्योंकि वो -1 हो जाना है. -4 का डेरिवेटिव -0 होता है. उसको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है. So you are basically left with 6t over e power 8, t square over e power 8 minus 4 whole square. And that is your acceleration. Okay. Now the next thing is find it when t is equal. Yes, go ahead. So why did you not take the derivative of e8, e power 8? Because e8 is a number. Just like 2 is a number, or just like pi is a number. ऐसे ही e भी एक नंबर है. e is not a variable. तो डेरिवेटिव तो हम वेरिएबल का लेते हैं. उसकी वजह क्या है? डेरिवेटिव इज बेसिकली चेंज, कि उस चीज में कितना चेंज आ रहा है आफ्टर अ व्हाइल. बट किसी भी कांस्टेंट में, किसी भी नंबर में तो चेंज नहीं आता है ना. 2 is 2 रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस. ठीक है, उसमें कोई टाइम की वजह से चेंज नहीं आएगा. जी जी. Sir, if e raised to the power 8 is a number, then why didn't you make it 0? Just उसका derivative. Like हमने 4 का भी तो derivative 0 लिया. Good question. Good question. Thing is, e power 8 is multiplying or dividing t square. So it will just remain as it is. उसका अलग से डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर वो प्लस या माइनस हो रहा होता, then I would definitely take a derivative of that. जैसे मैंने -4 का डेरिवेटिव लिया. But because so, it's sir, just, yeah. I'm so sorry कि मैं आपको No बीच में problem. interrupt करूँ. But like, बोले. sir, for example, अगर t square के नीचे 4 लिखा होता, ठीक है, so तब भी हम as it is 4 ही लिखते. Yeah, 4 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा. t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t बन जाएगा. तो 2 4 से कैंसिल भी हो सकता है. Oh, okay.
Thank you, sir. Okay. Yeah, you're welcome. All right, so we have acceleration here, and now we'll plug in the value. Remember, this part comes later. Once you have acceleration, then you will do it. Okay, so A is equal to 6 times 1 over E8 and 1 squared over E8 minus 4 whole squared. Don't forget the square part. So it becomes 6 over E8, 1 over E8 minus 4 whole squared. That's your answer at A at T is equal to 1. Okay, that's it. आपको आंसर मिल गया है. Now the next question we are going to do, variable x and y are related by the equation y equals x square root x. Now what's happening here is that x is multiplying with square root of x, and it's very easy to feel trapped in this कि ये दो चीज़ें multiply हो रही हैं, इनका derivative कैसे लें एक जैसे. So it's always a good idea to simplify before you do any derivative. So if you simplify this, this is x power 1 times x power half, and that way it becomes x power 3 by 2. All right, because 1 plus Yes, half sir. ho jayega to 1 and half. And now it's really easy to take derivative of this. Dy by dx is going to be the power multiplies 3 by 2 multiplies, and y power 3 by 2 minus 1 is 1 by 2. Okay, because 3 by 2 minus 1 simple, and that is half. If you're comfortable, you can convert it to 1.5 and then subtract 1 from it, and that way you will get half again. Okay, whatever you're comfortable with, and that's your answer. That's it. Next is saying find the approximate change in x Sir, when उसको y फिर हम increases. अंडर रूट नहीं कर देंगे What do you फाइनल mean under फॉर्म root में कर लाने देंगे? के लिए? अच्छा, आप उसको convert करना चाह रहे हो ऐसे? Yeah, That is because perfectly like fine. Sorry. usually I've seen कि you're not supposed to leave it like that. अगर question में अंडर रूट है तो फिर जब आंसर फाइनल आएगा वो अगर 1/2 हुआ तो you have to convert it into an under root. Like there's no compulsion to do that. Mathematically, there is absolutely no difference in having x power half or x in the square root symbol. कोई फर्क नहीं पड़ता as far as your exam marks are concerned or mathematical validity of your solution is concerned. They're both the same thing. ठीक है? Okay. फर्क नहीं पड़ता. It's your choice. Find the approximate change in x. So we have to find change in x when y increases from 8 by the small amount 0.015. So what does it mean? It means that when it goes from 8 to 8.015, that is y. Okay. What is the change in x? अब हमें डेल्टा नहीं पता. यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा इन y is 0.015 and delta x we do not know. मैंने पूछा था जब वो जब y increases from 8 होता है तो तब x क्या होता है? तब जो पहली वैल्यू है x की वो वेरी गुड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज कि भाई x की वैल्यू क्या है. अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 8, तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें चेंज कितना आ रहा है. तो लेट्स फिगर दैट आउट फर्स्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 8? सो 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x. So 8 is equal to x square root, 3 by 2. So obviously इसकी power 2 by 3 हो जाएगी. To cancel that out, power को opposite कर देंगे हम. So हमारे पास बन जाएगा, what is 8? 8 is simply 2 square root 2. तो उसकी power 2 by 3 जब होगी तो x equals to 2 आ जाएगा हमारे पास. अगर ये indices थोड़े से complicated लग रहे हैं आपको, तो another thing we can do is that we can show it one step at a time. Instead of completely going through it, we can be like, okay, 8 is 2 cube and this is 2 power 3 by 2. So let's take square of both sides. So if you take square of both sides, you'll end up cancelling this. So 2 cube is equal to x cube is equal to 2 power 6, and then you take cube root on both sides, and that gives me 2 power 2 is equal to x, which is 4. So हमारे पास x equal to 4 आ गया है. And once you have that, the next thing which is really easy to do is that, okay, we want to find change in x, right? Y is basically the dy by dx thing. यही होता है ना, change in y divided by change in x is basically a gradient. Why? Because we are assuming कि gradient जो होता है वो derivative ही होता है. So derivative and gradient are two different things. And what are they? They are basically ratios of the change. Derivative is a function जिससे हमें वो calculate करके मिलता है, और ग्रेडियंट वैसे हमें y2 minus y1 over x2 minus x1 करके मिलता है. ऐसी है. तो इसका मतलब है कि मुझे चेंज इन y पता चल सकता है यहाँ से अगर मुझे dy by dx मिल जाए. अब मैं जरा dy by dx निकालूंगा at x equal to 4. So what is that? 3 by 2 square root 4. क्यों? क्योंकि मैंने पहले निकाला हुआ है, ये मेरा डेरिवेटिव है.
तो मेरे पास बन जाएगा 3/2 times 2, which means it is 3. So I can say that dy by dx is equal to 3 when x is 4. And I can say that change in y divided by change in x is the same as dy by dx. तो change in y है 0.015, change in x मुझे नहीं पता, dy by dx is 3, so I cross multiply, I get 0.015 over 3 is equal to change in x, which is simply 0.005. y over dx जो है हम्म, वो 3/8 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं देखें, dy by dx is the gradient of y. सो आपने y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 4 है, लेकिन dy by dx is not 8 over 4. dy by dx is this function 3/2x square root x. तो इसमें हम वैल्यू प्लग इन करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. उसका मतलब क्या है कि हाउ इज द वैल्यू चेंजिंग. सो अगर y 8 है और x 4 है, तो जब x 5 होगा तो y कितना होगा 11, क्योंकि dy by dx बताता है हमें चेंज. सो y अगर 8 है जब x 4 है, तो अगर x में +1 होगा तो y में कितना प्लस होगा. dy by dx is 3. दैट टेल्स मी कि एवरी टाइम y इंक्रीजेस बाय 3 x इंक्रीजेस बाय 1. सो y में 3 ऐड कर दें आप, y is equal to 11 हो जाएगा. दैट्स व्हाट dy by dx is. इट्स अ ग्रेडियंट ऑफ थिंग्स. ये हमें बता रहा है कि y x के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है. अगर x में 1 का फर्क आता है तो y में कितना फर्क आता है, ये हमें ये बता रहा है. ओके सर, समझ आ गया. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. दिस इज अ बिग क्वेश्चन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उसने कंबाइन किया हुआ है डेरिवेटिव्स के साथ. नॉर्मल इज अ टर्म दैट यू नीड टू नो. व्हाट इज अ नॉर्मल. नॉर्मल इज बेसिकली अगर आपके पास एक लाइन है जिस पे एक दूसरी लाइन 90 पे आ रही है, तो और लेट्स सपोज ये एक दूसरे के नॉर्मल है, ठीक है. बट लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व का यहाँ पर एक लाइन ऐसे आ रही है जो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट का ग्रेडियंट सेम है उस ग्राफ के ग्रेडियंट के एट दिस पॉइंट. और अगर यहाँ पर कोई लाइन 90 पे आ रही है तो ये नॉर्मल है. So tangent has the same gradient as a curve, which means कि dy by dx is same as the gradient of tangent. और normal is perpendicular, which means normal और tangent का आपस में क्या रिलेशन है कि अगर मैं m1 लूँ और इसको m2 लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि m1 m2 equals -1, क्योंकि वो एक दूसरे के perpendicular नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं. So let's do it. हमारे पास ये फंक्शन है y is equal to 2x minus 1 over square root x plus 5, x squared plus 5. Looks a little complicated. So what I'm going to do is, I'm going to break it down. I'm going to say that, okay, I have two parts here. I have a u and I have a v. u is 2x minus 1 and v is square root x squared plus 5. तो मैं कहूँगा, okay, u का प्राइम क्या होगा. u का डेरिवेटिव होगा 2 times x bar 0 minus 0. So 2 मेरा डेरिवेटिव है. और v प्राइम क्या होगा, उसके लिए पहले मैं v को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये बनता है x स्क्वायर प्लस 5 पावर हाफ. तो v प्राइम क्या होगा, पहले मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर प्लस 5 रिमेन्स एज इट इज, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. नाउ आई एम एबल टू एक्सेस इनसाइड, सो इसका डेरिवेटिव होगा 2x. आर यू फॉलोइंग दिस? कोई इशू यहाँ पे? नाउ आई विल No, सिंप्लीफाई sir. दिस. आई विल गेट this 2 cancels with this 2. I get x over x squared plus 5 की power plus half. Now, instead of writing plus half, I can simply write the square root function, and that way I am able to get this is my v prime. अच्छा, अब इसको याद करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो ये कि हम फॉर्मूला याद कर लें, फॉर्मूला ऑफ अ डेरिवेटिव लाइक दिस, जहां पर दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं. द फॉर्मूला इज v स्क्वायर्ड v u प्राइम माइनस u v प्राइम, v u डैश माइनस u v डैश. इसको याद करने का एक और तरीका भी है. Let's suppose I'm going to call this function high and this function I'm going to call low. So my formula becomes low d high minus high d low over low low. It's a mnemonic thing. Okay, I learned it from a professor in UCL. Low d high minus high d low over low low. Low d high मतलब the low function as it is, ठीक है. ओके, तो लो फंक्शन एज इट इज वो बन जाता है स्क्वायर रूट
So low function remains as it is, square root x square plus 5. d high मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस हाई इज 2x minus 1. d low नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि बनता है x ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 5 ओवर लो नीचे वाला फंक्शन स्क्वायर्ड, 2 दफा लिखना है उसको. ये ले हमारा डेरिवेटिव बन गया. अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बट हमने आसानी से उसको सॉल्व कर लिया. इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं. ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5. That's your derivative. Now, because it's a very complicated solution, let's see उसने कोई वैल्यू दी है, उसने हमें x equals to 2 बताया है. तो I'll just plug in x equals to 2 है. So at x equals to 2, derivative is basically becoming 2 into 2 square plus 5 minus 2 into 2 minus 1 over square root 2 square minus 5 whole over 2 square plus 5. It seems like I might have made a mistake somewhere. Let me see. Did we do that? Anything like that? Yeah. So my mistake is कि मैंने माइनस उसकी पावर माइनस हाफ थी प्लस हाफ नहीं थी. तो उसमें जब -1 होगा तो -3/2 होगा, -1/2 नहीं होगा. तो ये मेरी एक मिस्टेक थी. सॉरी बट इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस. So this becomes 3/2. Sir, how is it This also minus half? becomes, क्योंकि देखें वो नीचे था. So I'll just plug in the value and this becomes x square plus 5 x square plus 5 2 square plus 5. हाँ जी ठीक है हो गया. So now I have 2 into square root of 9 minus 2 into 3 which is 6 over 3 whole over 9. So you simplify this and you get 1 by 9 times 2 square root 9 which is 3 again. So ये 6 बन जाता है 6 minus 2. तो आपके पास आंसर आ जाता है 4 over 9. That's your derivative of the tangent because that's the derivative of the curve. कर्व का जो भी ग्रेडियंट होगा वो टेंजेंट के ग्रेडियंट के बराबर होगा. सो नाउ यू फाइंड द टेंजेंट का ग्रेडियंट. अब हम नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालेंगे. नॉर्मल ग्रेडियंट इज बेसिकली 1 over m1 m2 equal to -1. Why? Because the gradients of perpendicular lines are negative reciprocals of each other. तो अगर एक का 4/9 है तो दूसरे का उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. मतलब आप रेसिप्रोकल लें उसको नेगेटिव करते हैं तो अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट्स योर ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल. यू हैव द नॉर्मल नाउ. तो आपको एक ग्रेडियंट मिल गया है. आपको x की वैल्यू भी पता है, आपको y नहीं पता है. तो y निकाल लेते हैं. y के लिए फंक्शन है हमारे पास 2x minus 1 over square root x plus 5 x squared plus 5 2x minus 1 over square root x squared plus 5. So we'll just plug in x equals to 2. So 4 minus 1 is 3 over 3, that is 1. So आपके पास एक पॉइंट आ गया है 2 1 और आपके पास ग्रेडियंट आ गया है -9/4. y minus y1 equals m x minus x1. लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, कोई मसला ही नहीं है. ये लें. We have found the equation. Sometimes जब आप मार्क्स स्कीम देखोगे ना तो उसने इस तरह नहीं वैल्यू दी होती आपको. वो आपको प्रॉबेबली इसी का आपको आंसर देगा 4y plus 9x equals to 22. That is the same as this. कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें. उसने इसी को बस एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया हमें rather than converting it to fractions and all that. ठीक है. So इसलिए it's perfectly fine to have it in this way. ठीक है. So I hope कि gradient समझ आ गया होगा.